Welcome to the next lecture of short-term certificate course, Introduction to Radiotherapy and its Applications. In this lecture, you are going to learn about composition of matter, atomic models, Bohr-Rutherford model, quantum mechanical model, types of forces, ionization potential, and the nature of radiations. So let us see the composition of matter. You all know that matter is anything that has mass and occupies space. And you also know that it occurs in three states: solid, liquid, and gases. When we divide matter, initially it was found that the smallest particle of matter, which is called as atom. Atom cannot be subdivided, but atom has atomic particles which are called as the nuclear particles, and there are many nuclear particles. So the atomic models. Initially, Dalton gave the first model, which is called as the Dalton's atomic model. According to Dalton's atomic model, he proposed that all matter is composed of very small things which are called atoms. Then came another model called as the Thomson's model after the discovery of electrons, and it was said that it is somewhat like a watermelon. Then the negative electrons, they are embedded inside the positive ether, which is also called as the plum pudding model. Then came the Rutherford's model, which is also called as the Planetary Model, and it was modified by Bohr, and he gave another model which is called as the Bohr's model. So let us see Bohr-Rutherford model. Now in Planetary Model, after the gold foil experiment, आपने देखा होगा कि गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से ही न्यूक्लियस इज अ सेंट्रल पार्ट ये पता चला था, और इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. तो एटॉमिक फिजिक्स में जब बोहर ने अपने नए पोस्टुलेट्स दिए थे, उसके बाद में ये जो ऑर्बिट्स है वो स्टेबल किस तरह से रहते हैं इसके बारे में बताया गया था. सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, द सेंट्रल पार्ट इज द न्यूक्लियस, एंड दिस न्यूक्लियस, it is surrounded by electrons as shown in this figure. The first shell, it has 2 electrons, the second shell it has 8 electrons, and thus the number of electrons goes on increasing with the number of cells, with the number of shells. So the formula is 2n square, where n is equal to 1, 2, 3 and so on. Accordingly, these shells, they are also named. Now in this case, it was found that the nucleus and these electrons, they have force of attraction, and this force is nothing but the electrostatic force, which provides stability to the atom. So do you remember what is this type of model, where we have orbitals, then the central nucleus, as in the Bohr's model also. So we have the orbitals like 1s, 2s, 2p, 3s, 3p and so on. This model is known as, the model is known as quantum mechanical model. The quantum mechanical model is based on quantum theory, which says that matter also has properties associated with waves. So according to this quantum theory, it's impossible to know the exact position and momentum of an electron at the same time. If you remember, this is uncertainty principle. The quantum mechanical model, as you can see here, we have the 1s orbital. Each main orbit is again divided into different orbitals, and the electrons are somewhat in the form of electron clouds with this type of orbitals, 2s, 2p, and the number of electrons in each orbitals, they are different. 4 numbers are mainly used to define. These are the principal quantum numbers: principal quantum number n, the angular momentum quantum number L, then we have the magnetic quantum number ML, and the spin quantum number MS. So we have the basic model of a neutral atom in this way, where we can see the central nucleus having protons and neutrons. It is surrounded by this electrons which are orbiting in different orbits. The planes of the orbits, they are different. So inside the electron, it is somewhat the structure inside the electron. So we have the revolving electrons present in the atom. Now let us revise some of the terms related with the
atom. The number of protons or electrons in a nucleus is called as atomic number Z. If you remember, the atomic mass A, it is the total number of protons and the neutrons in the nucleus of an atom. When the number of protons equals the number of electrons, that atom is said to be in a stable or neutral state. And if the electrons in the orbits are maintained by the electrostatic force, of course, between the positively charged nucleus and the negatively charged electrons on one hand, and there is another force called as centrifugal force of the revolving electrons. So there is a balance between these two types of forces. As you can see, plus and minus the Coulomb's electrostatic force, there is a force of attraction between the positively charged nucleus and the negatively charged electron, and this force is always found to be directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between the two charges. So this holds the atom together, the nucleus, which acts as the positive charge, and the surrounding electrons acts as the negative charge, and the force the electrons are held by the nucleus. Now we all know that whenever there is a circular motion, then we also have the centrifugal force, which is always directed along the radius away from the center. It tries to pull the electrons away from the nucleus. So a balance between these two forces, electrostatic and centrifugal forces, keeps the electron in orbit around the nucleus. So there is a rotational motion. We apply the circular motion formula in this case. Now, as we can see, the electrons, they are attracted towards the nucleus by a force. If we want to remove the electron from the shell, then we have to supply an amount of energy which is called as the binding energy of the electron, or it is called as the ionization energy. Now this ionization energy will be different for different cell, or it is specific for each shell. The electron shell closest to the nucleus will have the greatest binding energy. जो इलेक्ट्रॉन नज़दीक में है न्यूक्लियस की, उसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा रहेगी, और जैसे जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी, और जो लास्ट ऑर्बिट रहता है वो लूजली बाउंड कहते हैं हम उसको, एंड उसकी एनर्जी, अगर उस इलेक्ट्रॉन को हमें वहाँ से रिमूव करना है तो हमें लीस्ट एनर्जी लगेगी एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन विच इज़ इन द इनर मोस्ट शेल. So as you can see, the central nucleus here surrounded by the electron, and this electron, it is nearest to the nucleus, so its binding energy will be highest. And if you take the last type of this electron which is in this orbit, then the orbit is far away from the nucleus and hence the ionization energy will be less. So अंदर के जो electrons है उनको remove करना है तो हमें बहुत ज़्यादा energy लगती है, और अगर हम इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना चाहते हैं इनर मोस्ट ऑर्बिट से आउटर मोस्ट ऑर्बिट की तरफ, तो डिफरेंस बिटवीन जो एनर्जी है वो हमें उसको सप्लाई करनी पड़ती है. एंड ऑन द अदर हैंड, अगर समझो बाहर की ऑर्बिट है, जैसे कि यहाँ पर हमने ऑर्बिट्स को शो किया है, इस ऑर्बिट से अगर हम इलेक्ट्रॉन लोअर मोस्ट ऑर्बिट पे जंप करता है तो इतनी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दिस टू एनर्जी लेवल्स विल बी एमिटेड आउट और गिवन आउट. So this is lost energy given in the form of electromagnetic radiation. So ionization word अभी तक हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो बाउंड रहते हैं न्यूक्लियस को, और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. जैसे सोडियम अगर हमने ले लिया, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, और इस इलेक्ट्रॉन को अगर हमने किसी वजह से रिमूव किया तो तब उसका नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, एंड द एटम विल देन बी कन्वर्टेड इनटू एन आयन. तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट अगर है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अगर हम रिमूव करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन लेस हो जाएगा एंड इट बिकम्स आयन. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटम इनटू आयन विल बी कॉल्ड एज आयोनाइजेशन, एंड द एनर्जी सप्लाइड इज द आयोनाइजेशन एनर्जी. Now, as we have seen that when electron jumps from higher energy orbits to the lower energy orbit, then it will give off energy in the form of radiation. So radiation is nothing but the transmission of energy through space and matter. Now these radiations, they are of two types. It is the particulate and the electromagnetic radiation.
ना पार्टिकुलेट रेडिएशन क्या होते हैं, जैसे कि वर्ड है पार्टिकल, सो पार्टिकल से हमें वर्ड मिला है पार्टिकुलेट रेडिएशन. इट कंसिस्ट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई और सब एटॉमिक पार्टिकल्स मूविंग एट हाई वेलोसिटीज, जैसे कि अल्फा पार्टिकल्स है, बीटा पार्टिकल्स है एंड कैथोड रेज है. ये जो है these are the examples of particulate radiation. As you can see in this case, alpha particle is being emitted here and here beta particle is emitted. Now these particulate, the capacity of particulate radiation to ionize atoms. जैसे हमने देखा ये रेडिएशंस जो निकल रहे थे पार्टिकुलेट हो सकते हैं या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो सकते हैं, तो इनकी कैपेसिटी जैसे जैसे वो मीडियम से पास होते हैं तो तब उनकी एनर्जी जो है वो लूज होती जाएगी. एंड मीनवाइल वो जो भी रास्ते में जितने भी एटम्स उनसे टकराएंगे तो उनको वो आयंस में कन्वर्ट करते जाते हैं, मतलब आयोनाइजेशन प्रोसेस होता है यहाँ पर. सो इट डिपेंड्स ऑन द मास, वेलोसिटी एंड चार्ज, कि वो जो पार्टिकल है वो अल्फा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल है, तो उसका कितना मास है, कितना चार्ज है, इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि पार्टिकल कितने दूर तक ट्रैवल कर सकता है. द रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी फ्रॉम ए पार्टिकल एज इट मूव्स अलोंग इट्स ट्रैक इज कॉल्ड एज लीनियर एनर्जी ट्रांसफर. A particle loses kinetic energy each time it ionizes adjacent matter. जैसे ये पार्टिकल यहाँ से जा रहा है और ये पार्टिकल जैसे ही किसी मैटर से टकराता है और उस आइटम को वो आयन में कन्वर्ट कर देगा, आयोनाइज कर देता है, तो उसकी जो एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी. फिर वो नेक्स्ट एटम को आयोनाइज करेगा, उसकी एनर्जी और कम होती जाती है. तो ऐसे जो है एनर्जी धीरे धीरे उसकी लूज होती जाएगी. द ग्रेटर इट्स फिजिकल साइज एंड चार्ज द लोअर इट्स वेलोसिटी. जितना उसका, जैसे अल्फा पार्टिकल का साइज ज़्यादा है, मास ज़्यादा है, तो उसकी एनर्जी जो है उसकी वेलोसिटी उतनी थोड़ा कम हो जाएगी और उसका लीनियर एनर्जी ट्रांसफर जो ज़्यादा रहता है. जैसे अल्फा पार्टिकल जैसे हमने देखा हाई चार्ज है, लो वेलोसिटी, इट विल लूज काइनेटिक एनर्जी एंड हैव शॉर्ट पाथ लेंथ्स. तो वो यहाँ से यहाँ तक ही ट्रैवल कर पाएगा, एक पेपर शीट तक ही वो ट्रैवल कर सकता है, उसको क्रॉस कर सकता है. जबकि बीटा जो पार्टिकल है उसका मास जो है कम रहता है, इट इज़ लाइटर मास एंड लोअर चार्ज, तो उसकी जो लीनियर एनर्जी ट्रांसफर है वो कम रहती है. दे कैन पेनिट्रेट थ्रू टिश्यू, वो टिश्यू से भी इस तरह से पेनिट्रेट हो सकता है. और आगे चल के अगर हमने गामा रेज वगैरह देखे जो फोटॉन से बने रहते हैं तो वो स्टील शीट से पास हो सकते हैं, लेड से पास हो सकते हैं. तो इस तरह से इनका लीनियर एनर्जी ट्रांसफर डिपेंड करता है कि कितना मास है और कितना उसकी एनर्जी, कितनी वेलोसिटी है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. Now these electromagnetic radiations, what are these radiations? Electromagnetic radiations, they move through matter and space. They are made up of electric and magnetic fields. जैसे यहाँ पर दिखाया है ये electric field है और ये magnetic field है. Now these electric and magnetic field, they are perpendicular to each other and travel in a direction perpendicular to both of them. As shown in the figure, this is the direction of traveling of the electric and magnetic field being perpendicular to each other. It is generated when velocity of an electrically charged particle is changed. तो जब electrically charged particle की velocity change होती है तो ये electromagnetic radiations generate होते हैं. Examples है gamma rays, X-rays, ultraviolet rays, visible light, infrared radiation, microwaves and radio waves. Let us see some of the properties of these electromagnetic radiations. As you can see in this case, the radiation that transfers in nature, and these radiations are characterized by wavelength and frequency. So the wavelength, it is the distance between two consecutive crest or two consecutive trough, and the movement can be shown in this way also here. Wave theory can be used to explain the properties of the waves. All electromagnetic waves, they travel at a velocity of speed of light. Waves of all kinds exhibit properties of wavelength and frequency, and we have this formula lambda into wavelength into frequency is equal to c, that is the speed of light. So these are the wavelength and frequency shown here. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमने पहले भी देखा था. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नॉन आयोनाइजिंग और आयोनाइजिंग रेडिएशन से बना रहता है. इस साइड में जैसे हम देखते हैं वेवलेंथ बढ़ते जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, और इधर फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी और वेवलेंथ कम होता जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ रेडिएशंस कैन डिफर इन प्रॉपर्टीज. शॉर्ट वेवलेंथ हो सकते हैं या फिर लॉन्ग वेवलेंथ हो सकते हैं. द शॉर्टर वेवलेंथ, इट मीन्स इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, इंक्रीज एनर्जी, इंक्रीज इन द पावर ऑफ पेनिट्रेशन, and longer wavelength decreased frequency, decreased energy accompanied.
So let us take the recap of this. Thank you for